हेलो एवरीवन, मेरा नाम रजत है और आज हम बात करेंगे बेंचमार्किंग के बारे में। सो बेंचमार्किंग होता क्या है? सो बेंचमार्किंग, इफ आई टॉक अबाउट, राइट, सो बेंचमार्किंग इज अ प्रोसेस of measuring the performance of an organization against those of another organization that is considered to be best in class. So इसको इजी वर्ड्स में समझाने के लिए, मेरी ऑर्गेनाइजेशन एक प्रोडक्ट बना रही है ए बी सी, राइट, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन भी एक प्रोडक्ट बना रही है ए बी सी, राइट, बट मेरा लीड टाइम ज़्यादा है जबकि दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का लीड टाइम कम है, राइट. So we go ahead and compare the performance of our organization with the performance of the other organization, right? Which is considered to be best in class. In this case, lead time we are comparing, right? So what is the motive behind doing benchmarking, right? So the motive behind benchmarking is to identify the areas of improvement. So we get to know what all improvement steps should we take to go ahead and reduce, right, the lead time here in this example, right? So we go ahead and compare our internal processes, right, and study what makes superior performance and then implement them in our organization and thus making significant improvement. So हम यहाँ ए बी सी जो ये कंपनी है, सपोज करो एक्स वाई जी, इसके बेस्ट प्रोसेसेस को स्टडी करेंगे, एनालाइज करेंगे और उसके बाद हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट कर लेंगे बेस्ट प्रैक्टिसेस, राइट. सो देर आर टू टाइप्स ऑफ बेंचमार्किंग. वन इज कॉन्टिन्यूस, राइट. अब कॉन्टिन्यूस बेंचमार्किंग क्या होगा? कॉन्टिन्यूस होगा स्मॉल steps to go ahead and improve, right? While the second one is drastic. So the entire process is revamped or re-engineered, right? So there are two types of benchmarking. One is continuous, one is dramatic. Now, what are the pros and cons that we can think of? So one pro is that benchmarking helps us to judge if we are heading towards the right direction, right? So when we compare, we get to know that if we are heading towards the right direction. अब कौन क्या होगा? कौन होगा? We can miss on a better solutioning, right? So benchmarking में अगर मैंने ब्लाइंडली कॉपी कर लिया या बेस्ट प्रैक्टिस कॉपी कर ली, इंप्लीमेंट कर लिया अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो हो सकता है कि जो मैं अपना स्टेप इंप्लीमेंट करना चाहता था वो ना करूं, राइट. सो वी कैन मिस ऑन अ बेटर सोल्यूशन बाय डूइंग इट, राइट. So this is one of the cons that is there for benchmarking. Now, what are the steps that are involved in doing benchmarking? So the first step that is consider. So what we consider, so we understand our own process. हमारा अपना process क्या कहता है? So we are going to understand it. And after understanding, we are going to plan. Now, what we are going to plan? We are going to choose issue. By understanding this process, we'll get to know what is the issue with our organization, right? So we choose the issue that is pinching us. After choosing the issue that we have chosen, right? So we go ahead and identify the partners that are best in class, right? So हमें देखना है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन हमसे बेटर कर रही है उस फील्ड में, right? Third is we go ahead and collect the data. So we collect the data from partner. After we go ahead and collect the data, we go ahead and analyze it. So what we do is in analyzing is we go ahead and compare the data collected with our data, right?
So after that is done, we go ahead and identify the gaps. कि gaps क्या हैं हमारे प्रोसेस में और जो बेस्ट इन क्लास चल रहा है उसके प्रोसेस में क्या डिफरेंस है, राइट? द लास्ट स्टेप इज वी गो अहेड एंड अडेप्ट. अब अडेप्टेशन कैसे करेंगे? वी गो अहेड एंड इम्प्लीमेंट एंड देन वी ऑल्सो गो अहेड एंड मॉनिटर. मॉनिटर इसलिए इंपॉर्टेंट है, वी गेट टू नो कि हमने जो चेंजेस किए वर दे फ्रूटफुल और नॉट. So these were the steps, the 5 steps that we follow for a normal benchmarking process. So with that being said, we come to an end to this video. Please subscribe to my channel. It's very much needed. It will help me as well. So thank you so much for watching and have a great day ahead.